Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Yadav and I have 8 years of teaching experience in the field of GATE and Engineering Services Examination. I've qualified GATE 5 times and I've also qualified uh, written test of State Engineering Services Examination Uttar Pradesh and some Maharatna PSUs as well like NTPC, SAIL, BHEL, Coal India Limited uh, and some other PSUs. So first of all, you all need to download Unacademy Learning app. First of all, you all need to download Unacademy Learning app and get your subscription. After getting your subscription, what you will get daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access. Okay. Now आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, साथ ही साथ आपको लाइव सेशंस का recorded courses भी available है. Right. You can also access the recorded session of the live classes. Right. But the benefit of live classes is you can ask your doubts. Right. There are polls created in the class itself. You can participate in the polls. Okay. You can participate in the polls. Live test मिलेंगे आपको, quizzes मिलेंगी. All these things you can get on Unacademy platform after getting your subscription. Okay. तो लाइव क्लासेस होती है वो एक फुल इंटरेक्टिव क्लासेस है. आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी टॉपिक आपका क्लास में चल रहा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, उसको आप डिस्कस सकते हैं. स्ट्रक्चर कोर्सेस, आपके जो कोर्सेस होंगे, आप गेट दे रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, राइट. जो कोर्सेज है अनअकैडमी पे वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन, राइट. दैट विल गिव यू द मैक्सिमम. You will get chance to learn with the top educators. Okay. गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो बैचेस चलते हैं थ्रू आउट द ईयर एट द अनअकैडमी, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज. लाइक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग देयर आर 24 कोर्सेज. For electrical engineering, there are 18 courses: CSIT, civil engineering, electronics and communication, general aptitude, mathematics. All these branches, इन सारी ब्रांचेस के लिए जो अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उससे पार्ट ले सकते हैं, एंड यू कैन right avail all the benefits in these lecture in these courses throughout the number of courses होते हैं, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज. क्या कोई भी बैच. नाउ the most important thing is you have options of selecting two kinds of subscription. One is the plus subscription, other is the iconic. If you go for the plus subscription, you will get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDs, live test and quizzes. Okay. Uh, when you select iconic subscription, you will get the same things: India's best educator, interactive live class, structured course and PDs, live test. These things are common at both platform plus and iconic. But the unique feature that iconic subscription has is personal coach. You will get a personal coach. With your personal coach, you can have one-to-one discussion about your doubts, right? Regarding the subject, regarding the planning of the subject for a particular examination. किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर किसी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर पार्ट को आप कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना. ऑल दिस थिंग्स यू कैन डिस्कस विद योर पर्सनल कोच, राइट. आपकी जो टेस्ट एनालिसिस होगी दैट विल आल्सो बी पर्सनलाइज्ड. Study, you will get study planners, study preparatory, study material. All these things you will get at Unacademy Iconic subscription. Okay. Now the fee for 24 months is 44,000 rupees. 44 for 18 months, this is 38,500. For 12 months, this is 30,250. Okay. All these things you can get on Unacademy. प्लस सबसे एक नॉमिनल फीस है, लेकिन इसमें भी अगर आपने ये रेफरल कोड यूज किया, if you use this referral code, right, if you use this referral code, you will get 10% discount, and ultimately for 24 months you have to pay 39,600 rupees only. For 12 months, this will be 27,225 rupees. Okay, for 18 months, this is 34,650 rupees.
Okay. Now, uh, iconic subscription, no courses, 12 months and 24 months, fees 50,250 and 74,000 rupees. But for 12 months, like if you're going for 12 months, the fee will become 45,225. For 24 months, the fee will become 66,600 after using this referral code. This is your referral code, Ravi PY. You will get 10% discount and ultimately you have to pay this. Okay. तो प्लस या आइकॉनिक में से जो भी सब्सक्रिप्शन आपको सूटेबल लगता है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और सारी बेनिफिट जो मैंने आपको बताई उसको अवेल दैट्स अप टू यू कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। ये जो कोड है दिस विल बी एप्लीकेबल एट ऑल द प्लान्स जो मैंने आपको बताया सारे प्लान पे एप्लीकेबल है। आप कोई सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बट इफ यू आर गोइंग फॉर आइकॉनिक दैट विल हेल्प यू इम्प्रूविंग योर आपकी जो रैंक है उसको इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेगा। अपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, एक पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा, दैट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग बेटर रैंक। आप पीएसयू जाएंगे तब भी आप हायर एजुकेशन एमटेक के लिए जाएंगे तब भी आपको बेटर रैंक चाहिए होगी, राइट? नॉट जस्ट अबाउट द सिलेक्शन, ऑल्सो नीड अ बेटर रैंक टू गेट अ बेटर कॉलेज और बेटर पीएसयू, ठीक? आपके चांसेस बेटर हो जाएंगे। और तो इसके लिए आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए आप जाते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर, ठीक? So I hope you got all these points and you will get your subscription as soon as. Let's start the current series. We are discussing, thermodynamics. We have already completed this subject. We have already completed the subject thermodynamics. Okay. Now we are revising the subject. A quick revision. आपका for GATE 2021. This is for GATE 20. This is for the GATE 2021 revision through progress. मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि जो बेस्ट वे है रिवीजन का, दैट बेस्ट वे है best way for revision. Best way for revision is you should go for concept, quick revision of concept, like concept formula, जो भी फॉर्मूले हैं, like फॉर्मूले के पीछे जो एजम्पशंस है, एजम्पशंस एंड वैलिडिटी, कहाँ कहाँ पे वो फॉर्मूला वैलिड है, कहाँ पे वैलिड नहीं है, राइट? एंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रैक्टिस बिना प्रॉब्लम किए आप रिवीजन करेंगे। सिर्फ आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिया, जल्दी से रिवाइज कर लिया, फॉर्मूला आपने मेमोराइज कर लिया, तो ये आपको हेल्प नहीं करेगा। किसी भी टॉपिक को अगर आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बहुत ही जरूरी है, राइट? दीज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? क्योंकि होता क्या है कि जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, राइट, तो जब फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, उसके कंसेप्ट पढ़ लिया, वैलिडिटी पढ़ ली, वो सब ठीक है, लेकिन जब आपको, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट? वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट। जो गेट का एग्जामिनेशन है उसमें हमें इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है, राइट? सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लेने से नहीं है। और इसका जो एप्लीकेशन है, जैसे उससे बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिया, तो वो पॉइंट्स को आप मिस कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर ली, अगर आपने साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लिए हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन गेटिंग, दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग द फ्लो। फ्लो कह लें या रिदम कह लें, आपकी जो रिदम है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो रिदम होती है, रिदम होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की किसी पर्टिकुलर टॉपिक की। अगर आपने खुद रियलाइज किया होगा कि अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिया जाएगा तो आपको वो क्लिक होता है कि हमें इस प्रॉब्लम में कैसे प्रोसीड करना है, राइट? बिकॉज यू आर इन द रिदम, यू आर इन द फ्लो ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। आपने उससे मिलती जुलती बहुत सारी प्रॉब्लम्स की होती हैं, तो वो जल्दी से क्लिक कर जाए। ओके, तो यही चीज है आपकी एग्जामिनेशन के लिए। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, लेकिन अगर आपका रिविजन प्रॉपर नहीं, अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं है, तो जितना भी आपने आज तक पढ़ाई की है, ऑल दोस थिंग्स विल बी डन एंड टेस्टेड, राइट? ऑल दोस थिंग्स विल बी डूइंग अगर आपने रिवीजन प्रॉपर नहीं। रिवीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
Revision is one of the most important for selection, for rank. रिवीजन अब जो आपके पास टाइम है लास्ट 30 days अराउंड 25 to 30 days इनमें आपको जस्ट यू शुड गो फॉर द रिवीजन कैसे करना है मैंने कल भी डिस्कस किया था आज भी बताता हूँ कंसेप्ट पढ़ना है फॉर्मूला पढ़ना है उसको मेमोराइज करना है राइट यू नीड टू राइट डाउन ऑन द फॉर्मूला यू नीड टू राइट डाउन ऑन द फॉर्मूला ओके यू नीड टू राइट डाउन ऑन द उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है राइट यू शुड गो फॉर 10 to 15 राइट बहुत ज़्यादा नहीं 10 to 15 प्रॉब्लम्स पर टॉपिक 10 to 15 प्रॉब्लम्स पर अब होगा ये कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगी कि 10 to 15 प्रॉब्लम्स आप कैसे सिलेक्ट करेंगे किसी प्रॉब्लम के लिए दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सीरीज राइट आई हैव सिलेक्टेड 10 to 15 प्रॉब्लम्स जिससे कि जो आपका कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन रिवाइज जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन एक बार आपको फिर से रिदम में आ जाए फ्लो में आ जाए प्रैक्टिस में आ जाए राइट तो हम कुछ 10 to 15 प्रॉब्लम करेंगे ऑब्जेक्टिव और सॉरी कुछ थ्योरेटिकल भी कुछ न्यूमेरिकल ओके so in this way in 7 8 days we will revise all the thermodynamics in 7 to 8 lectures 7 to 8 to 9 lectures we will revise complete thermodynamics then we might start fluid mechanics also. Okay so I hope you got the point okay so let's start the today's session. Today we are going to discuss work transfer, right? I'll give you a quick revision जो भी हमने concept पढ़े थे. Work transfer. I'll give you the work transfer. ये चीज हमने पढ़ा था. What is work transfer? इसको हमने define किया था. Right? What is work transfer? ये सारी चीजें हमने basic definitions देखी थी. जो हम work transfer लिखते हैं, that is W equals to this is E. ये फॉर्मूला लिखते हैं और ये जो फॉर्मूला है दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर इसकी वैलिडिटी है फॉर क्लोज सिस्टम दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम सेकेंड रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस और इसको हम दिखाते हैं वर्क डन इसी प्रोसेस में जो वर्क डन होता है दैट इज अगर हमने पीडीवी डायग्राम ले लिया अगर हमने पीडीवी कर्व ले लिया पीडीवी कर्व अगर हमने पीवी कर्व लिया है इसमें कोई भी जनरल कर्व है ओके नाउ व्हाट इज पीडीवी अगर ये हमारा प्रेशर है दिस प्रेशर इज पी एंड दिस इज पी दिस इज पी दिस एरिया इज पी तो अगर हमें टोटल एरिया मिल जाए कहीं से इसकी अगर हमें इसकी कहीं से टोटल एरिया मिल जाएगी तो अगर हमें इसकी कहीं से टोटल एरिया मिल गई टोटल एरिया दिस एरिया represents work या फिर integration PdV a total area into our integration PdV that means area under the curve area under the curve area under the curve area under the curve on PV diagram on PV diagram projected on polymers when projected on volume axis gives ये मिल गया आपको वर्क क्लोज सिस्टम लेकिन ये जो वर्क है दिस वर्क इज फॉर क्लोज सिस्टम ओनली दिस वर्क इज फॉर क्लोज सिस्टम ओके तो ये हमने पढ़ लिया क्लोज सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है इसकी वैलिडिटी कहाँ पे होती है आपका जो वैलिड है दैट इज फॉर दिस इज वैलिड फॉर
क्लोज सिस्टम एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, अभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्यों भी क्यों ऐड किया है? क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप वर्क डन लिखते हैं, पीडीवी वर्क से लिखते हैं आप, तो आपको चाहिए होता है एरिया अंडर द कर्व, या फिर इस पीडीवी को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो आपको चाहिए टू फाइंड वर्क, टू फाइंड वर्क। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड रिमेंबर, टू फाइंड वर्क एट पीडीवी वर्क, ऑफ कोर्स टू फाइंड पीडीवी वर्क आपको जो चाहिए वो प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम गिवन होगा। आप सिंपली पी, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है, और प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब ये कर्व गिवन, राइट? दैट मीन्स कि जो आपका कर्व है पॉइंट 1 से 2 तक आप जा रहे हैं, तो आपको पॉइंट 1 से 2 तक का कर्व नोन है। और कर्व नोन कब होता है? जब ऑल द इंटरमीडिएट, कर्व मैंने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट में, यहाँ से यहाँ तक 1 से 2 तक जाने में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, ऑल दिस इंटरमीडिएट स्टेट्स आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स, और ये सिर्फ तभी होता है जब ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो। कल हमने डिस्कस किया था रिवर्सिबल प्रोसेस में ही आपको सॉलिड लाइन मिलती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जनरली आपका इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं मिलते रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो इसलिए आप सॉलिड लाइन लिखते हैं। तो जो सॉलिड लाइन लिखा है दैट मीन्स all the points here, all the points represents, all the points represents, all the points represents uh, जो भी आपका represents equilibrium states, equilibrium, all the points represents equilibrium, equilibrium। ओके, तो आपको वर्क डन चाहिए पीडीवी, तो इसका मतलब आपको एक कर्व चाहिए होगा, और एक कर्व कब मिलेगा? जब प्रोसेस आपका, तो आपको वर्क डन जब भी फाइंड करना होगा, तो पहला मेथड तो ये है, राइट? टू फाइंड वर्क पीडीवी वर्क, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा, उसको आप यहाँ से रख के उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, राइट? कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस होंगे, हम वो फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। वर्क डन, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेसेस, वर्क डन फॉर वेरियस प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, that volume is constant, that means dv is 0, that means work is, इसके लिए वर्क डन आपका 0 होता है। सेकेंड वन इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ओके, दैट मीन्स इसके लिए जो वर्क डन होगा दैट इज p v2 minus v1, प्रेशर इज कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट here, volume is, थर्ड वन इज आइसोथर्मल। ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आई गिव यू क्विक रीजन ऑफ द ऑल द फॉर्मूला, जो वर्क डन होता है दैट इज mRT ln v2 by v1, that is equal to FRT ln v1 by mRT ln v1 by, आइडिया कैसे कैसे सिंपल आपने इसका से, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही आपसे कितनी बार पूछ लिया जाता है इन द प्रॉब्लम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी, गेट में भी ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है, गेट में भी और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी सिर्फ ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम, ऑफ कोर्स दिस इज फॉर क्लोज सिस्टम, ऑल दीज फॉर्मूलाज फॉर क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम का वर्क हमने अभी किया, दैट इज फॉर क्लोज सिस्टम। फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस में होता क्या है, जो हीट ट्रांसफर है, दिस हीट ट्रांसफर इज जीरो, दैट मीन्स, और जो वर्क ट्रांसफर होगा from the first law of thermodynamics is del q equals to du plus del w, अगर ये जीरो है that means del q equals to, sorry, du is जीरो, तो del w जो हो जाएगा that means माइनस, जितना वर्क ट्रांसफर करेंगे होगा उसमें वो आपका चेंज इन टर्मिनोलॉजी में
बराबर होगा, दैट विल बी नेवर। कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, जो वर्क डन आएगा उसको जो इंटरनल एनर्जी है वहीं से आएगा, और जो वर्क का फार्मूला होता है दैट इज V1 माइनस 2V2 गामा माइनस गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक ये एडियाबैटिक प्रोसेस PV2 पर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV2 फॉर n इक्वल्स, और यहाँ पे भी जो वर्क डन होगा दैट इज P1 माइनस 2P2 बाई n माइनस P1 माइनस V2 बाई n माइनस 2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। और भी कुछ कंसेप्ट है जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके साथ देखेंगे, जो वर्क डन में आप ध्यान रखते हैं। इसमें एक कंडीशन और होती है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन, आप कभी भी वर्क डन लिखते हैं दैट वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, राइट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वर्क इज बाउंड्री फिनोमेना, शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क हमेशा बाउंड्री फिनोमेना है, वर्क शुड क्रॉस द, ये सारे प्रोसेस आपने लिख लिए अलग अलग वर्क डन के लिए। इसके अलावा जो आप स्लोप लिखते हैं, स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये पांच प्रोसेस है। तो आपके पास दो तरीके, अगर वर्क डन फाइंड करने का एक तरीका तो ये है कि आपके पास वर्क डन फाइंड करना है पीवी वर्क से, तो प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम अगर गिवन है तो आप सिंपली उसको इंटीग्रेट कर लेंगे एंड यू विल फाइंड द, राइट, या फिर नहीं गिवन है कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस है इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे एंड यू विल फाइंड द, दिस इज एज सिंपल एज। इसके अलावा एक चीज आप पढ़ते हैं दैट इज एक कोई जनरल प्रोसेस हो गया, पीवी फॉर के इक्वल्स टू कोई भी जनरल प्रोसेस आपने ले लिया और आपने इसका पीवी डायग्राम रखा, दिस इज पीवी, राइट, दिस प्रेशर वॉल्यूम, दिस इज आवर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, दिस इज आवर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, this is k equals to 0 and this is k equals to infinity, और इसके अलावा k equals to 1, k equals to n and k equals to k equals to n and k equals to, right, this is constant pressure process। uh, ये भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट पे आपको देखिए करके 0 है दैट इज p इक्वल्स टू कांस्टेंट, k इक्वल्स टू 1 दैट इज p इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज isothermal process, and this is polytropic and this is adiabatic, isothermal, polytropic and this is constant volume, ये क्वेश्चन पे इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसे ही आपका, ये तो आपका एक्सपेंशन के लिए था, सारे प्रोसेस आपके ऐसे जा रहे थे, दिस इज, आप कंप्रेशन के लिए भी चाहे तो इसको बना सकते थे, दिस इज, इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया था कैसे ये आता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, दैट यू कैन वॉच, वो लेक्चर आपके पास अवेलेबल है, आप डिटेल देख सकते हैं, बट हियर this is something like, this is constant pressure process, that means k equals to, here k equals to infinity, p equals to constant, बाकी बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो
लाइक थोड़ा सा कर्व समझ लेंगे इसमें कैसे ही बना समथिंग। Okay, this is for compression process. This is for the compression. This is k equals to 1, k equals to n, and k equals to gamma, right? And k की आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, दैट इज फॉर आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये चीज हमने पढ़ा था। इसके अलावा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड adiabatic adiabatic curve on EV, right? जो आइसोथर्मल कर्व होता है दैट इज dp by dv for isothermal, that is minus p by d, minus p by d, and dp by dv for adiabatic, and that is gamma times minus p by gamma is greater than 1, gamma is greater than 1, that means adiabatic slope is greater than isothermal, adiabatic slope is greater than isothermal, right? तो जो आपका कर्व इसलिए आप देख रहे हैं जो स्लोप है आइडियाबैटिक आइसोथर्मल का जो स्लोप है दैट इज सॉरी आइडियाबैटिक का जो स्लोप है दैट इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। आपको ऊपर के कर्व में ये चीजें दिख रही है। ओके, दैट यू कैन सिंपली वेरीफाई, दैट यू कैन सिंपली वेरीफाई फ्रॉम जो आपका आइसोथर्मल कर्व है दैट इज जो स्लोप है आइडियाबैटिक स्लोप इज ग्रेटर देन, और जैसे जैसे अभी गामा की वैल्यू बढ़ती जाती है एज गामा इंक्रीजेस द स्लोप becomes steeper, slope becomes, आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप के की वैल्यू गामा की जगह हमने के यूज कर लिया है कांस्टेंट, कोई जनरल कांस्टेंट, तो के वन एन जो दैट इज एन इज ग्रेटर देन वन बट लेस देन पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, दैट इज पॉलीट्रोपिक, जो पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है वो गामा से कम है लेकिन वन से ज्यादा। ओके, दिस इज योर पॉलीट्रोपिक इंडेक्स। जैसे जैसे आप गामा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं आपका जो स्लोप है दैट स्लोप इज बिकमिंग स्टीपर एंड ओके, द स्लोप इज बिकमिंग स्टीपर एंड दिस इज द इक्वेशन। और इसके साथ आपने ये देख लिया कि वर्क डन निकलने का हमारे पास लिखने के दो मेथड है, एक तो ये कि आपको गिवन हो टू फाइंड वर्क, फर्स्ट मेथड तो ये है टू फाइंड वर्क, जो फर्स्ट मेथड है वो ये है, आपको प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम गिवन हो आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आपको वहां से वर्क, या फिर कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस गिवन होगा उसको फॉर्मूला यूज करेंगे। जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं जो भी फॉर्मूला पे लिखा है ये फॉर्मूले भी आपके वहीं से आते हैं, राइट? ये फॉर्मूले भी आपके वहीं से आते हैं। ओके, ये फॉर्मूले भी आपको वहीं से आते हैं, हमने इंटीग्रेट ही किया था प्रेशर एज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमें न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। जो भी स्टैंडर्ड प्रोसेस हमने पढ़े थे उसके लिए आपका आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV equals to MR, this is our ideal gas। first process is constant volume, constant volume process। now what is constant volume process, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू P proportional to P, that means P2 by P1 equals to T2 by simple। second one is constant pressure, second one is constant pressure, that is pressure is constant। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में
if the pressure is constant, उस केस में जो हम स्टार्ट करेंगे that means constant pressure. Constant pressure equals to constant, this is constant pressure. The pressure आपका constant है, उस केस में यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. That means m और r तो constant है, mass and gas constant is already constant. That means V2 by V1 equals to P2 by P2. And third one is isothermal. Third one is isothermal. अगर आपने isothermal process लिया है, उस केस में क्या? Third one is isothermal process. That is temperature is constant. Isothermal means temperature is constant. In that case, PV equals to constant. That means P1 V1 equals to P2. This becomes constant, and that means P1 V1 equals to. Now the fourth one is adiabatic. Fourth one is adiabatic. Right. What is adiabatic? Fourth one is adiabatic. तो आपने adiabatic process लिया है, उस केस में that is PV for gamma equals to constant. एक तो फॉर्मूला ही हो जाता है P1 V1 to the power gamma equals to P2 V2 power gamma. दूसरा P1 V1 to the power gamma minus 1 equals to P2 V2 power gamma minus 1. Next one is P2 by P1 equals to P2 by P1 or gamma minus 1. Okay. Now this formula is one of the most important formula that we use in, right? This is one of the most जो हम अपने सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में आईसी इंजन पावर प्लांट आरएसी सब में ये जो फॉर्मूला है P2 by P1 equals to P1 by power minus 1 gamma. This formula is like applicable in all the subjects, right? Equally applicable in all the subjects. This is our P2 by P1 power gamma minus P2 by P1 power gamma minus 1. This is our फिफ्थ वन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगा. उसके लिए तो आपको सिंपल है, पॉलीट्रॉपिक सिमिलर फॉर्मूला होगा. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस that means P1 V1 to the power n equals to 4. P1 V1 by n equals to P2 V2 to the power n. P1 V1 by n minus 1 equals to P2 V2 to the power n minus 1. P2 V2 by n minus 1 or P3 V3 to the power n minus 1 by T2. In the formula T2 by T1 equals to P2 by P1 to the power n minus 1 to the power n minus 1. All this formula that will be valid. ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके यहाँ पे, जिनको हमें यूज करना है जब भी हम सब्जेक्ट ये था आपका क्विक रिविजन फॉर्मूले का. और जो कंसेप्ट है इसके अलावा जो भी वर्क के बारे में जो भी आपका जो भी बातें हैं, वर्क इन थर्मोडायनामिक्स वर्क इज जो भी वर्क होता है दैट इज बाउंड्री फिनोमेना. बाउंड्री फिनोमेना का मतलब ये होता है वर्क इज बाउंड्री फिनोमेना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री फिनोमेना? लाइक कुछ प्रॉब्लम्स जो हम करेंगे इसके बेस. व्हाट इज बाउंड्री फिनोमेना मींस कि अगर आपने सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, कोई भी सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, राइट, ये आपने सिस्टम सेलेक्ट कर लिया. अब जो वर्क है इस बाउंड्री को क्रॉस करना चाहिए, राइट. अगर बाउंड्री फिनोमेना है दैट मींस वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री. अब सपोज मैंने आपको बताया था, राइट, वर्क इज बाउंड्री फिनोमेना इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल,
इसीलिए जो हम यूज करते हैं इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू। कहने का मतलब मेरा ये है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये सारी चीजें पूछ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अब सपोज दो चीजें हैं, एक सिस्टम हमने, ये हमारा सपोज सिस्टम है, और एक सिस्टम हमने यहाँ पे लिया, एक सिस्टम ये है और दूसरा सिस्टम हमारा, और एक थर्ड सिस्टम हमने और ले लिया यहाँ पे, तो क्या है, दिस इज आवर सिस्टम। और ये हमने सिस्टम की डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, दैट इज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दिस इज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, सिंपली हमने तीनों की बाउंड्री। अब अगर होगा क्या कि अगर हमने सपोज तीन सिस्टम दिखा ली, तीनों की बाउंड्री दिखा ली, अब सपोज कि मैं आपसे ये कह दूं, या फिर मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दूं, थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दूं, लेट मी चेंज द दूसरा डायग्राम लेते हैं। सिस्टम है, ये कह लिया कोई सिस्टम ए है, और इसमें हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर किया सपोज, और अभी जो हमने सिस्टम लिया है वो ऐसे लिया, दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब एक दूसरा सिस्टम हमने लिया है, दिस इज कॉल्ड पी, और यहाँ पे कोई शाफ्ट लगा दिया हमने, कोई शाफ्ट है जो शाफ्ट रोटेट कर रही है, ओके, और ये हमने कह दिया सिस्टम का, शाफ्ट हमने रोटेट कर दिया है। और एक सिस्टम हमने ऐसा लिया है, सेम ऐसे ही कर लो, चलो कोई बात नहीं, एक सिस्टम सी कह लिया हमने, एक सिस्टम हमारे पास सी है, या फिर बी ही कह लो, कोई बात नहीं, सिर्फ हमने बाउंड्री चेंज की। सिस्टम जो बी है इसमें है, दिस इज द शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग विद ओमेगा, दिस शाफ्ट इज रोटेटिंग विद, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सिस्टम ए, बी और सी में क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस सिस्टम ए, बी एंड सी, ओके, तो आप क्या बताएं यहाँ पे, हियर आप ये देखते हो व्हाट इज बाउंड्री फिनोमेना, बाउंड्री फिनोमेना का मतलब इस बाउंड्री को, जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रॉसिंग दिस बाउंड्री, दैट मींस इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल वर्क, राइट, वर्क ट्रांसफर, इसीलिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज वर्क ट्रांसफर, हम बार बार ट्रांसफर वर्ड यूज, यहाँ पे है मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर, क्योंकि हमने बाउंड्री जो ली है, इस बाउंड्री को आपको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को क्या क्रॉस कर, मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर, ये बाउंड्री थी, इस बाउंड्री को शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, दैट इज मैकेनिकल वर्क। यहाँ पे इस बाउंड्री को, जो सिस्टम की बाउंड्री है, इस केस में, थर्ड केस में कुछ भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिंपली सिस्टम वही है जो पहले था, सेटअप वही है, दिस इज वन, थर्ड में सेटअप वही है जो टू में, थर्ड में सेटअप वही है जो टू में था, करेक्ट, यू कैन सी दैट सेम शाफ्ट है, कैसे रोटेट कर रहे हैं हमें उससे कुछ लेना देना, लेकिन इस सिस्टम की बाउंड्री को वो शाफ्ट रोटेट कर रही है, दैट इज क्रॉसिंग, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज क्रॉसिंग द बाउंड्री, दैट मींस इन दिस केस मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर इज, दैट मींस इन दिस केस मैकेनिकल वर्क ट्रांसफर इज, सेम सेटअप है, सेम थिंग यू आपको, सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस थर्ड केस ऑल्सो, लेकिन इस सिस्टम की बाउंड्री को कुछ भी क्रॉस नहीं कर रहा है, दैट मींस नो वर्क, दैट मींस हियर you will see that is there is no work, there is no work, right, तो ये था कंक्लूजन जो थ्योरेटिकल पार्ट का वर्क आउट लेके, कि जो फार्मूला पढ़ा आपने पीडीवी वो कहाँ कहाँ वैलिड है, वर्क ट्रांसफर क्या होता है, दिस इज दैट्स व्हाई वी यूज द टर्म वर्क ट्रांसफर। एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि थर्मोडायनेमिक्स में दो ही टाइप के एनर्जी इंटरेक्शन होता है, एक वर्क के फॉर्म में और एक हीट के फॉर्म में। जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर है दैट इज हीट ट्रांसफर, बाकी कोई भी वर्क, कोई भी टाइप की एनर्जी ट्रांसफर दैट इज वर्क ट्रांसफर, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी इसको हमने के लिए वर्क ट्रांसफर, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर है दैट इज वर्क ट्रांसफर, लेकिन अगर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी तो उसको हम कहते हैं दैट इज अवर हीट ट्रांसफर, ओके, तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी थे जो मैंने आपको बताया, बाकी लेट अस सी क्या होता है, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे हम इससे बेस्ट, मैंने बताया था दैट इज द बेस्ट वे, एक बार आपने ऐसे रिवाइज कर लिया फॉर्मूला लिख के, एंड देन वील गो फॉर सम प्रॉब्लम्स, ओके, क्या द फर्स्ट प्रॉब्लम, you solve this, you have 1 minute to solve this question,
1 minute to read and then again 1 minute to solve this. इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. A piston cylinder device with air at an initial temperature of 30 degrees Celsius undergoes an expansion process for which the pressure and volume are related as given. 3 पॉइंट्स पे है. प्रेशर, this is in kilopascal, pressure is in kilopascal and volume is in liter. Kilopascal है. Now you have work done for the system. N is given this. N equals to 1/4. अब से पूछा गया है कि what is the work done by the system for N equals to 1/4. एक तरह का पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, एक तरह का आपके पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपसे पूछा गया है कि वर्क डन फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वर्क डन कितना होगा ये आपसे. सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. P1 equals to 100 kilopascal and V1 equals to पॉइंट. ये P2 V2 है लेकिन हम डायरेक्ट P3 वगैरह वही है सब कुछ N. तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे P3 दैट इज 14.4 एंड V3 इक्वल्स टू 0.4. ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस है, कुछ इस टाइप का प्रोसेस है. अगर पीवी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का प्रोसेस है. आपको गिवन है 1 2, इस सब पे प्रेशर कितना है, प्रेशर कम होता जा रहा है, राइट. 130 वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है. इसी समथिंग लाइक एक्सपेंशन प्रोसेस है, राइट. एक चीज और है, एक चीज जो हमने और दिखा लिया था, एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन प्रोसेस में वर्क डन आपका नेगेटिव. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज 1 2. हमने व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक वर्क, व्हाट इज पॉलीट्रॉपिक वर्क, P1 B1, हम डायरेक्ट थर्ड पॉइंट पे जाएंगे 1 से थर्ड तक, माइनस P3 V3 नीचे टू फाइनल बाय N माइनस. व्हाट इज P1 B1, 100 into 0.1 minus 14.4.4 divided by divided by 0. This is, let me find the answer. .6. The answer is here. Answer is 10.6. The answer here is 10.6. Work done here is 10.6. Okay, हमने सिंपल 1 2 3 तक, आप 1 से 2 2 से 3 दोनों ऐड कर लेते हैं तो भी आपको वर्क डन उतना ही मिलता है जितना आपका 1 से एरिया लगता है. आप पहले 1 से 2 तक फाइंड कर लेते हैं, ये तो अगर इसमें 2 2 to 3 फाइंड करके ऐड करते हैं तब भी वर्क डन आपका इतना ही आता है जितना वर्क डन नहीं है आपका. ओके, जितना वर्क डन आपका ये. ओके, फॉर दोज हु आर ज्वाइनिंग टुडे, राइट, या फिर जिन्होंने आपका ये थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर्स है वो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट आप फाइंड कर सकते हो, उसको देख सकते हैं इंजीनियरिंग लैब चैनल पे, या फिर अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे मैं आपको ये जो लेक्चर्स हैं दैट आई एम स्टार्टिंग, राइट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे
full course, full course on thermodynamics. That I will be starting from tomorrow. Full course on that will be starting. That I will be starting from tomorrow onwards. Right? You can also watch those lectures from tomorrow onwards. You can watch the full course on thermodynamics on Unacademy learning. This is one thing. यहाँ पे आपका वर्क मिल गया. Let's find out. Okay. You have 1 minute to solve this question. 2 kg steel occupying 0.3 meter cube at 15 bar is expanded according to the law even given for 1.3. Polytropic process है, इसका polytropic index है 1 to a pressure of 1.5. Work done during the expansion. जब भी expansion होगा, जो work done होगा, that work done will be positive. जब भी आपको compression होगा, right, जो work done होगा, that work done will be, अगर volume increase करना है, V2 is less than, when V2 is less than, जब भी compression होगा, आपका work done होगा, that will be वर्कडन पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन कन्वेंशन था, आई होप कि आपको याद होगा, मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, क्लास में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव. जब आप कंप्रेस कर रहे होते हैं किसी गैस को, राइट, यहाँ पे भी कंप्रेशन हो रहा होता है, वहां पे आपको वर्क देना पड़ता है, दैट वर्क इज नेगेटिव. जब भी एक्सपेंशन होता है, वर्क आपको मिलता है, लाइक टरबाइन 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 से वर्क आपको मिलता है, कंप्रेसर से वर्क आपको. ये क्वेश्चन है आपके पास सिंपल, सिंपली ट्राई दिस क्वेश्चन. You will simply try this. Let us see. P1 is given as 15 bar. If P2 is given as 1.5, V1 is given as 0.3 meter cube. V2 is not given. Okay. तो सबसे पहले तो हम V2 फाइंड करेंगे. इसके बाद आपको पता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन विल बी P1 V1 minus P2 V2 by n minus. Simply the work done will be this. So what is V2? What is V2? कुछ नहीं है, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. फॉर पॉलीट्रॉपिक process. For polytropic process, P1 given for n equals to P2 V to the power, P2 for n equals to P1 by P, V1 to the power. Now what is P1 by P2? Point P. Now what is V2? V2 is something around 1 point. V2 is something around 1.75, right? 1.75. Yes, 1.7, 1.76, 1.76. V2 मिल गया. V2 आप यहाँ पे रख लेंगे, आपको आंसर
something around this, and you will find the work. You put all these values in this. The work done will come out 618, 618.3, 618. Okay. This will be your next one. When the valve of an evacuated bottle is opened, when the valve of an evacuated valve is open, the atmospheric air rushes into it. If the atmospheric pressure is 101.325 kilopascal and zero point zero 0.06 meter cube of air enters into the bottle, then work done will then work done. आपको work done कितना होगा ये आपसे simple question. Try this. A simple question that you should. You should simply try this question. Okay. सिंपल क्वेश्चन है आपको कुछ करना नहीं है इसमें क्या कहा गया आपसे प्रेशर इतना गिवन है और पहले वो इवैक्यूएटेड है इनिशियल दैट इज इवैक्यूएटेड यहाँ पे तो सिंपल वर्क इज पी डेल्टा वी इज पी इज 101.325 into point. This is as simple as that is 608 point what is 60 point 60.8. This is as simple as 60.8, right?
When the valve of an evacuated bottle is open, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपका प्रेशर चेंज है वर्क डन बाय द एयर एयर का जो वॉल्यूम चेंज है दैट इज डेल्टा वी 0.6 मीटर क्यूब और जो उसका प्रेशर है दैट इज ए कांस्टेंट प्रेशर दैट इज 101. PV2 minus V1 that is 6 point. Next one. Try the next. During a constant pressure expansion process of the gas, 33.3% of heat is converted into work, while temperature rises by 20 Kelvin. This is 20 Kelvin. 20 degrees Kelvin. That is rises by 20 degrees. The specific heat of the gas at constant pressure as proportion of work. Specific heat of the gas CP पूछा है, right? CP by W कितना होगा ये? What will be the CP by? Specific heat of the gas at constant pressure as proportion of work. CP by W ये आपसे यहाँ पे that has been asked CP by. Okay, what will be CP by? आपसे कहा गया है सोल्यूशन में आपसे कहा गया है कि जो अपने जो हीट दिया है उसका 33.3% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू जो आपने हीट सप्लाई किया है उसका इतना परसेंट आपने कन्वर्ट किया while the temperature rises by 20 Kelvin. Now heat transfer, what is heat transfer here? What is heat transfer? What is heat transfer? Here in this case heat transfer that is Q equals to Cp delta T, Cp delta T. Right, now Cp and delta T is 20. What is Q? Q is W by point T. Okay, that is 20. आपको जो चाहिए that is Cp by W. What is Cp by W? 1 by 20 point. That is 0.15. 0.1501 year 15. That is 50%. That is 15. This is engineering Celsius examination. 15 point, sorry, 15%. This is the 15%. Answer is correct option is 15. Okay. We have 1 minute to read this question and try to.
इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया है, हीट रिएक्शन गिवन है और प्रेशर और सॉरी फ्रॉम द तो प्रोसेस गिवन क्लोज्ड सिस्टम है, gaseous system undergoes a reversible constant pressure process is constant pressure at 2 bar in which 100 kJ heat is rejected and the volume changes from point to 1 point sorry point 1 meter. Right. Just simply try this question. Tell me the simply try this question and tell me what should be the simple. Let us try. आपसे कहा गया है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. What will work done? Del W that will be P P2 minus P1. What is P? 2 bar that is 10 to the power 5 kilopascal. Pascal. What is V2? Change it from point 2 to point 1, point 2 to point. Right. So initial final volume is point 1, initial volume is 0. Okay. Now that will be point 1 that is to the 4 that is 20 kilos. This will be 20. Now first law of thermodynamics. First law of thermodynamics del Q equals to EU plus L. Here से पूछा गया internal change internal energy. Del Q is given heat is rejected, right? Heat is rejected, that means this will be negative minus EU and plus, and this is minus. This is minus 20 minus, that means du is okay, that is minus du is minus 80. Simply du is minus 80. Du is minus 80. सिंपली आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो प्रॉब्लम्स है वो गलत होने के चांसेस बहुत ही मिनिमम होते हैं, क्योंकि सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास फॉर ए प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए प्रोसेस. इसमें क्वेश्चन गलत तभी होगा जब आपने जो साइंस है, और ये साइंस है प्लस और माइनस, अगर इसको आपने करेक्टली देख लिया, हीट रिजेक्टेड, जो हीट है मैंने पहले फिर से बता देता हूँ आपको, और कोई सिस्टम है, हीट सप्लाई किया गया है सिस्टम को और वर्क सिस्टम से मिल रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज, लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, सिस्टम को आपको वर्क देना पड़ रहा है और हीट वहां से रिजेक्ट हो रही है, दैट इज नेगेटिव. दिस इज आवर साइन. इस साइन कन्वेंशन पर अगर आपने ध्यान दिया तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है. अदरवाइज प्लस 80 माइनस 80, राइट, अगर आपने प्लस 20 लिख लिया होता है यहाँ पे, दैट वुड बी आंसर वुड बी माइनस 20, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग. तो आपको प्लस माइनस का एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना है अगर आप फर्स्ट आंसर वाले क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन गलतियां सिर्फ प्लस और माइनस में होती है जल्दबाजी के चक्कर में. जो भी आप एग्जामिनेशन का प्रेशर, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रेशर, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से करना है. आपको ऑफकोर्स जल्दी से करना है, बट एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है. स्पीड एंड एक्यूरेसी बोथ आर
तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। और साइक्लिक प्रोसेस, ध्यान देने की चीज है वो ये है, दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस। What will you do if it is a cyclic? Simply quickly tell me the answer for this. Simple. First law for first law for, तो अगर पूछा गया है साइन, that is sigma q equals to sigma w. Right. Net heat transfer equals to net work. What is net heat transfer? 30, that is positive, minus 10, minus 50, plus 60, that is sigma w, that is net work. Simple आपको ऐड कर देना, that is sigma w is, ये आपका क्वेश्चन है, that is from इंजीनियरिंग। This is question from engineering sciences examination, and this answer is 30. Answer is 30. सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पूछा, तो ये पता करना चाह रहे थे इस क्वेश्चन में कि वेदर यू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। कल मैंने अलग अलग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स बताया था सबके लिए, और प्रोसेस के लिए भी, साइकिल के लिए भी, और प्रोसेस के लिए जो अलग अलग फॉर्मेट है उसको आई रोट दैट फॉर इन 4-5 टर्म्स, राइट, इन 4-5 टर्म्स। आई होप कि आपको वो चीजें क्लियर होंगी, कैसे उन सब चीजों का this is next. An ideal gas at 20 degrees Celsius, at 20 degrees Celsius, heated at a constant pressure till the volume becomes 3 times temperature of the gas. Yes, sorry, process is constant pressure. Temperature of the gas, constant pressure process है, pressure is constant, जो ideal gas equation है, T2 by, what is T2? T2 by V1 into, what is V2 by V1? V2 by V1, what is V2 by V1? 3 times, no? That is because 3 times. This is 3 times T1, that is 900 Kelvin. T1 is 300 Kelvin. ये जो डिग्री सेल्सियस गिवन है, जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं इसमें एब्सोल्यूट टर्म से करते हैं, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी।
तो जो आपका टेम्परेचर की जो यूनिट होनी चाहिए दैट इज T1 इज 300। आप 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे नहीं। ओके, जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो आपके टेम्परेचर है दैट शुड बी इन केल्विन, जो प्रेशर है दैट शुड बी किलो पास्कल। तो आप एब्सोल्यूट टर्म में रखेंगे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाएगा जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज 900, सिंपली दिस इज 900। नाउ आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में गिवन है, दिस इज डिग्री सेल्सियस, दिस डिग्री सेल्सियस, T2 will be 900 minus 273, that is 627 degree. This is a 627 degree. This is the process in which there is only work interaction between system and sound. चार प्रोसेस आपको दिए हैं, डायबेटिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एंड प्रोसेस एंड क्वासिस्टेम। डायबेटिक प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस पता है, एडियाबैटिक प्रोसेस आपको सब कुछ पता है। ओके, आपको ये प्रोसेस बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क इंटरेक्शन, बाकी इंटरेक्शन ना हो, तो ऐसे प्रोसेस आपको बताने हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क इंटरेक्शन। मैंने आपको बताया था इन थर्मोडायनेमिक्स तो ड्यूरिंग द थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ दो ही टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन होती है सिर्फ दो टाइप के, वन इज द वर्क, अदर इज द थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ दो ही टाइप के एनर्जी इंटरेक्शन, थर्मोडायनेमिक एनर्जी इंटरेक्शन, ये हमने जब लेक्चर डिस्कस किया था उस टाइम मैंने बताया थर्मोडायनेमिक एनर्जी इंटरेक्शन, इंटरेक्शन सिर्फ दो फॉर्म हो सकते हैं, हीट है दैट मीन्स थर्मल एनर्जी that is flowing because of temperature difference, thermal energy. Work is the work transfer है that is all other forms of energy, all other forms of all other forms of energy, right? जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, केमिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, ऑल दीज एनर्जीज विल बी कॉल्ड वर्क ट्रांसफर, राइट, हीट ट्रांसफर। अब जो आपका प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो है, तो सिर्फ व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज, तो अगर आपको किसी एडियाबैटिक प्रोसेस में एनर्जी इंटरेक्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्क के फॉर्म में। ओके, तो आपका जो एडियाबैटिक प्रोसेस में एनर्जी इंटरेक्शन होता है सिर्फ वर्क इंटरेक्शन के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि वहां का एडियाबैटिक बाय डेफिनेशन है दैट हीट ट्रांसफर, दिस विल बी आंसर इज देयर इज नो वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन दिस। ये जो प्रोसेस गिवन है इसमें सिर्फ इसमें वर्क ट्रांसफर, एडियाबैटिक वर्क ट्रांसफर होगा क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में होता ही जो आपका जो ट्रांसफर होता है दैट इज ओनली, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है कि वहां पे सिर्फ वर्क ट्रांसफर ही होता है, हीट ट्रांसफर नहीं होता। अभी हमने देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में ओनली वर्क इंटरेक्शन, कोई हीट ट्रांसफर नहीं। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क और हीट दोनों हो सकता है, पॉलीट्रॉपिक में वर्क और हीट दोनों हो सकता है। अब व्हाट इज प्री एक्सपेंशन, प्री एक्सपेंशन इज कॉल्ड एक्सपेंशन against vacuum, expansion against vacuum, expansion against vacuum is called pre-expansion। कहने का मतलब ये है कि सपोज कोई कंपार्टमेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का केस होगा, राइट, ये आपने पार्टीशन लगा दिया है, इंसुलेटेड कर दिया है, यहाँ पे कोई गैस है और ये है वैक्यूम, और यहाँ पे वैक्यूम है इनिशियली आपका, यहाँ पे दिस इज योर इनिशियल। अब होगा क्या कि अगर आपने ये पार्टीशन हटा, अगर आपने ये पार्टीशन हटा दिया, जो गैस है अगर ये पार्टीशन आपने हटा दिया, ये पार्टीशन हटा दिया, तो यहाँ पे जो गैस थी, ये जो गैस है, this gas will slowly fill up in, this gas will slowly fill up in this chamber also, right? लेकिन इस चैम्बर में there is vacuum, what is vacuum, in this chamber there is vacuum, okay? तो जब भी ये वर्क डन करते हैं,
जो वर्क डन करते हैं, कोई चीज जब मूव कर रहे होते हैं, सपोज आपके पास पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर है, यहाँ पे गैस है, ये जो गैस है इस पिस्टन को मूव कर रही होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वर्क। कहने का मतलब ये है कि जो वर्क होता है दैट इज अगेंस्ट समथिंग, आप किसी भी चीज के अगेंस्ट वर्क करते हैं, राइट। अगर वैक्यूम है दैट मीन्स देयर इज नो रेजिस्टेंस इन दैट अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, राइट, वैक्यूम के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा दैट विल बी, क्योंकि सपोज यहाँ पे पिस्टन है, जब गैस एक्सपैंड कर रही होगी तो जो पिस्टन है उस प्रेशर लगा रहा होगा, उस पिस्टन के अगेंस्ट वर्क होगा, राइट, उस पिस्टन के अगेंस्ट वर्क होगा। लेकिन जब फ्री एक्सपेंशन होगा वहां पे ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, यू विल वॉच द लेक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्री एक्सपेंशन, टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट इज फ्री। ये सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे आप उसको देख लेंगे, दैट इज फ्री, राइट। तो जो एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, और जहां पे भी फ्री एक्सपेंशन होगा वहां पे वर्क ट्रांसफर होगा, फ्री एक्सपेंशन वर्क ट्रांसफर। आंसर इज वर्क ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज अ पॉइंट फंक्शन। नो, पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं कि आप किसी भी दो पॉइंट के बीच पी आएगा, मेरे कोई डायग्राम पॉइंट, यहाँ पे प्रेशर हर बार आपका पी होगा, यहाँ पे प्रेशर हर बार पी टू होगा। आप ऐसे गए थे या फिर ऐसे गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए से गए थे या फिर, तो अगर प्रेशर है, राइट, वॉल्यूम है, यहाँ पे हमेशा वॉल्यूम आपका बी वन होगा, यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा बी टू होगा। तो दीज आर द कॉल्ड पॉइंट फंक्शन। लेकिन जो वर्क डन है वो एरिया अंडर द कर्व होगा, इसके लिए हमेशा एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द, वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द पाथ। ईडीवी वर्क हमेशा, ईडीवी वर्क वही होता है जहाँ पे आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की। और भी अलग अलग टाइप के वर्क होते हैं, वर्क ट्रांसफर, इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर, मैकेनिकल वर्क, राइट, और भी अलग अलग टाइप के वर्क ट्रांसफर होंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क ट्रांसफर हो सकता है। ईडीवी वर्क तो सिर्फ वो है जहाँ पे आपने कुछ चीज डिस्प्लेस की है, जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। फंक्शन ऑफ प्रेशर ओनली, नो दिस इज नॉट दिस, प्रेशर वॉल्यूम सबका फंक्शन होगा। तो ये सारी चीजें आपसे गलत है, सिर्फ ये है कि डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलो, दैट इज work transfer depends on the path followed by the practice. Okay. Next problem is, in which of the following process in a closed system the thermal energy of the gas is completely converted into internal energy, resulting in an increase in gas temperature? Simple question. You should. In which of the following processes in a closed system thermal energy of the gas is completely converted into internal energy, resulting in an increase in gas temperature? Okay. मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं ऑनलाइन। पहले लेक्चर जो भी सब्जेक्ट था दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, कि आपका इंजीनियरिंग लैब चैनल पे अवेलेबल है। जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, एट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी ऐप, आई एम स्टार्टिंग थर्मोडायनामिक्स, फुल कोर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन थर्मो, full course of thermodynamics that I'm going to start from the right, from tomorrow onwards. I will be starting full course on thermodynamics. तो अगर आपने यहाँ पे लाइव क्लासेस मिस कर दी है इंजीनियरिंग लैब चैनल पे, यू कैन वॉच दैट ऑन अनअकैडमी ऐप। ओके, जो आपका हीट ट्रांसफर है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज del Q equals to du plus del W. Now which one of the following processes in a closed system the thermal energy of the gas is completely converted into internal energy resulting in an increase in gas? बाकी सब में कुछ ना कुछ वर्क ट्रांसफर होता है। ओके, आइडियामेटिक में भी और आइसो, आइडियामेटिक में हीट ट्रांसफर जीरो है। थर्मल एनर्जी जो आप देते हैं दैट थर्मल एनर्जी, व्हाट इज थर्मल एनर्जी, दैट इज टी। मैंने आपको बताया था जो थर्मल एनर्जी है उसे कहते हैं दैट इज आवर टी। जो थर्मल एनर्जी है इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। ये कब होगा, जब आपका वर्क डन, जब वर्क डन जीरो होगा तो आपको जो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी है दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू
जो आपका del Q है that will be E. Okay, converted to energy resulting in an increase of gas temperature. ये कब होगा? राइट, तो यहाँ आइसोथर्मल वर्क डन आपका जीरो नहीं होता, एडियाबैटिक वर्क डन जीरो नहीं होता, बच गया आपके पास प्री एक्सपेंशन एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। जो प्री एक्सपेंशन है उसमें ये जो du है, ये du इज G, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। जो प्री एक्सपेंशन है अपन उसमें जो चेंज इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर जीरो होता है। आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम से बाहर कोई हीट ट्रांसफर नहीं है, डेल क्यू इज जीरो इन दिस सिस्टम। कोई आपका हीट ट्रांसफर सिस्टम से बाहर तो नहीं होगा, तो आपका हीट ट्रांसफर यहाँ पे ओके, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर जीरो है। ओनली आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मीन्स पीबीवी इज जीरो, दैट मीन्स वर्क इज जीरो। जो भी एनर्जी आप देंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी, कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, that will be converted in the form of internal. Okay, that is it. Right, resulting in increase in the, और जो आपका इंटरनल एनर्जी है, दिस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी राइट, तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉब्लम, right? 85 kilojoule of heat is supplied to a closed system at constant volume. During the next process of the system, 90 kilojoule of heat at constant pressure rejects. Sorry, the system rejects 90 kilojoule of heat at constant pressure, while 20 kilojoule of work is done on it. Work is done on it. Work is done on the system. That means this should be negative. The system is to the original state by brought to the original state by an adiabatic process. By an adiabatic process, the initial internal energy is 100 kilojoule. Then quantity of work done during the process. Okay? Quantity of work done during the process. जिस process से आप उसको अपने original state पे okay? You have 2 minutes to solve this question. Okay, I'll give you 2 minutes to solve this. The quantity of work done during the process. Then quantity of work done during. Okay, let us try and solve this. Let us try and solve this. 85 किलोमीटर पर हम इसको प्रोसेस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस ड्रॉ द प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होगा? ड्रॉ पीवी डायग्राम ड्रॉ। दिस इज आवर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम।
85 किलोजूल हीट इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट सप्लाई करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर विल इंक्रीज, दिस विल गो मल्टीप्लाई ऑन दिस. और हीट आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं. Then during the next process, system rejects 90 kilojoule of heat at constant. System अगर heat reject कर रहा है तो volume will reduce. This will come to. Now in the next process, happens system is brought to the original state by an adiabatic. एक adiabatic process है और इससे आप वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे ओके फ्रॉम 3 to जो आपको गिवन है Q12 प्रोसेस 1 to 2 तक 85 किलोजूल हीट इज सप्लाइड. दैट मींस दिस इज 85 किलोजूल हीट सप्लाई कर रहा है. हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव. During the next process, system rejects 90 kilojoule of heat. 223 is 90 kilojoule, but this is minus. That system rejects. At constant pressure, while 20 kilojoule work is done on it. Work 23 is minus 20 kilojoule क्योंकि आप वर्क डन सिस्टम को दे. And initial internal energy, what is initial internal energy? That is Q1 is given as 100. All these things are. आपसे पूछा गया क्वांटिटी ऑफ वर्क डन और ड्यूरिंग. ये जो लास्ट वाला प्रोसेस है T21 वर्क T21 इज वर्क T21 आपसे पूछा गया है. बाकी इतनी सारी चीजें आपको गिवन है. Okay, now how we are going to solve this? पहले प्रोसेस 1 2 के लिए देखते हैं. फॉर प्रोसेस 1 2 राइट Q12 equals to Q12 plus work 1 2. Work 1 2 is 0 क्योंकि जो वॉल्यूम है that is constant. Work 1 2 is 0 because volume is constant. Q12 is given as 85. Q12 is U2 minus U1. From here we will get U2 equals to 185 kilojoule. U1 is 100 that is given. U1 is 100 that is 185 kilojoule. तो आपको U2 मिल गया. Now for the process 2 to 3. If 2 to 3 equals to 2 to 3 plus work 2 3. Now what is Q 2 3? That is minus 90. Q 2 3 is U3 minus U2 plus work 2 3 that is minus 20. Right? Minus 20. Minus 90 minus. Okay, from here we will find U3. This is minus 70. The U2 is 185. That is 115 kilojoule. Okay, U3 is 115 kilojoule. Now we have U1, U2, U3. We all have all these things. Now for the process 3 to 1. Now for the process 3 to 1. Okay. Q31 equals to U31 plus 1. Q31 is 0 because the process is adiabatic. Right? The process is adiabatic. Q31 is 0, no process is adiabatic. Work 31 is minus work 2, 3. Okay. Minus U1. Final minus means U1 minus what is U1? 185 minus U3 is 1. Right. U1 is 100, right? U1 is 100. U1 is 100. That is given. U1 is 100. U1 is 100. Minus 105. That is minus 15. That is minus is already there. That means 31 is 15 kilo. Q1 is 15 kilo. So 131 is 15 kilo. There is the. सिंपली एक बार आपने प्रोसेस ड्रॉ कर लिए. कौन कौन सा प्रोसेस है? एक पहला प्रोसेस आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस था. दूसरा प्रोसेस आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था. और ये थर्ड प्रोसेस है, ये adiabatic process है. That is PV to power gamma equals to. Adiabatic process PV to power gamma equals to C. Right? This is adiabatic process PV to power gamma equals to C. Right? Everything else is given. So, everything else is here. Everything else. Okay. You find it.
एक बार आपने ये प्रोसेस ड्रॉ कर लिए तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, तो बाकी काम आपका आसान हो जाएगा. You can simply solve this. The quantity of work done during the process is, and that is 15 kilo. That is 15 kilo. Okay, I hope you got that. Okay, moving towards the next problem. A little bit of the kind of problem. Okay, you have 1 minute to read this question and try to figure out the formula, and then next 2 to 3 minutes to solve this. 3 to 4 minutes. Totally, you have 3 to 4 minutes to solve this. You have 2 to 3 minutes to solve this question. You have to find final pressure inside the cylinder and work done by the two parts of this question, and you will, alright, you should solve one by one. Okay. First, try to understand what is being said in the problem, then try to solve. First, draw the diagram. आपसे कहा गया एक piston cylinder device है. There is a piston cylinder device. Let me draw the figure here. That there is a piston cylinder device. In this case, there is a piston cylinder device. This is initial case. Initially, piston cylinder device is here, और यहाँ पे एक spring, right? There is a spring in here, and that is something like, right? और cylinder device contains, और ये जो इसका initial volume है, that is 0.05. This is 0.05. अभी जो इसका फाइनल वॉल्यूम है, जब आपने इस पे हीट सप्लाई किया, फाइनली जो गैस है वो कंप्रेस हो गई. दिस गैस इज नाउ कंप्रेस, और पिस्टन आपका यहाँ पे कहीं मूव कर गया, और आपकी जो पिस्टन है वो यहाँ पे मूव कर गया, एंड दिस वी एफ इज ट्वाइस ऑफ दिस इज फाइनल. जो यहाँ पे जो पहले केस में था, जो आपका पिस्टन है जस्ट टचिंग द, सॉरी, जो स्प्रिंग है, दिस स्प्रिंग इज जस्ट टचिंग द पिस्टन, नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स. स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. इनिशियली जो प्रेशर है P1, चलो P1 V2 कह लेते हैं. we will call this P1, and this is P1 V2. But this P1 is 200 Pascal. Like P1 is 200. अभी जब स्प्रिंग आपकी और ये जो एरिया है, दिस पिस्टन एरिया ए इज 0.25, 0.25 millimeter. Piston area, that is 0.25 millimeter. This piston area is 0.25. How we are going to solve? अब आपको समझ में आ गया, क्लियर पिक्चर मिल गई कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे. ये जो पिस्टन मूव कर गया अपने इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, देखेंगे डायग्राम आपका वैसे. सपोज कि ये डिस्टेंस जो मूव की है, दिस डिस्टेंसेस, उतना ही कंप्रेशन हुआ होगा, स्प्रिंग में भी कंप्रेशन हुआ होगा x.
कॉम्प्रेशन इन कॉम्प्रेशन इन इस स्प्रिंग में भी इतना ही कॉम्प्रेशन, इस स्प्रिंग में भी इतना ही कॉम्प्रेशन हुआ होगा जितना आपका यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, इतना ही कॉम्प्रेशन आपका इस स्प्रिंग में भी। ओके, नाउ लेट अस सी कि हमारा जो इस स्प्रिंग में है इतना ही कॉम्प्रेशन हुआ है, तो ये कॉम्प्रेशन हुआ कितना, V2 माइनस V1 इज ए एक्स। ओके, जो चेंज इन वॉल्यूम है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये डिस्टेंस है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ए एक्स, राइट। V2 माइनस V1 इज ए एक्स और V2 कितना है, फाइनल वॉल्यूम इसका इनिशियल का ट्वाइस है, इनिशियल पॉइंट आपका ये 0.5 ही बच जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू ए 0.25 इंटू एक्स इक्वल्स टू, राइट, what will be x, x will be, that is 0.2, this is 0.05, यहाँ से जो x होगा that is 0.2, x will come as point। अब जो इनिशियल पोजीशन है P1 कितना है, P1 is 200 किलो पास्कल, ठीक। अब जो P2 हो जाएगा that will be P1, आपने जो हीट किया है वो प्रेशर प्लस पिस्टन का आपको जो हीट किया है आपने तो प्रेशर अंदर का तो है प्लस आपका पिस्टन का भी प्रेशर, अलग, और जो सर स्प्रिंग का भी प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर, स्प्रिंग का भी जो प्रेशर, स्प्रिंग जो प्रेशर वहां पे अप्लाई। ओके, एंड दैट विल बी 200 प्लस PS। व्हाट इज PS? स्प्रिंग का जो प्रेशर बढ़ गया है वो प्रेशर कितना है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स, व्हाट इज PS, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स बाय area, spring force by area. What is spring force? Kx by area. What is K? 150 into 0.2 by 0.25. Okay. यहाँ से आपको स्प्रिंग फोर्स मिलेगा that is 120. Now what is P2 is 200 plus 120. दूसरे केस में uh, that is 320 kilo. बाद में जो प्रेशर बन गया, बाद में जो प्रेशर है that is 200 किलो पास्कल। फाइनल पोजीशन, इनिशियल प्रेशर आपका P1 था, फाइनल प्रेशर इज P1 प्लस 320 किलो। ओके, ये है आपका फाइनल प्रेशर, ये है आपका पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो आपको फाइंड करना था दैट इज व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इन द, यहाँ पे सिलेंडर स्टॉप कर गया है दैट मींस पहले जो प्रेशर था और जो आपका पिस्टन का प्रेशर है, इसी वजह से इस पिस्टन को मूव किया, उस पिस्टन का प्रेशर, तो पिस्टन मूव कर रहा है उस पिस्टन का प्रेशर और प्लस आपका स्प्रिंग, राइट। व्हाट विल बी द सेकंड, क्योंकि पहले ये पिस्टन, पहले ये इनिशियल केस में जो स्प्रिंग था, पहले सॉरी इनिशियल केस में जो स्प्रिंग है नो स्प्रिंग फोर्स, राइट। पहले में आपका जो स्प्रिंग है उसका कोई फोर्स नहीं, क्योंकि जस्ट टच इट, राइट, नो स्प्रिंग फोर्स, उसका कोई प्रेशर नहीं आएगा, जो गैस के इनसाइड प्रेशर है वही प्रेशर था, ठीक। अभी क्या है let me uh, let me clear this once again, this P1 and what is P1, आपका जो इनिशियल केस में था पिस्टन प्रेशर होगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनिशियल केस, इनिशियल केस में क्या होगा वह ये है कि जो इनिशियल केस था मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि बेटर समझ में, कुछ कंफ्यूजन होगा तो भाई हमने P1 ले लिया था। इनिशियल केस में क्या था, यहाँ पे P1 था एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो पिस्टन का प्रेशर, ये बैलेंस था 200 किलो पास्कल, ये था इनिशियल, राइट। फाइनली क्या होगा, फाइनल में क्या होगा कि यहाँ पे पिस्टन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी उतना ही था, पिस्टन प्रेशर अभी भी उतना ही था और प्लस यहाँ पे एक स्प्रिंग का प्रेशर और, राइट, और यहाँ पे जो इनसाइड लग रहा है दैट इज P1 था और यहाँ पे था इनसाइड, तो जो P2 होगा इसको आप ऐसे भी लिख सकते चाहो तो,
और यहाँ से क्या मिल गया आपको, P1 इक्वल्स टू P एट मास J, P1 इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज P2, P2 को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, P2 को हम ऐसे लिख सकते हो, पिस्टन प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस स्प्रिंग प्रेशर, और ये है दैट इज 200, दिस इज 200 प्लस 120 दैट इज 320 किलो पास्कल। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। जो नेक्स्ट है, जो हमारे पास नेक्स्ट फाइंड करना है दैट इज व्हाट विल बी द, जो हमें नेक्स्ट फाइंड करना है व्हाट विल बी द वर्क डन बाय, दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो गैस है तो वर्क डन कितना, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय, जो गैस है वो किसके अगेंस्ट वर्क, सिंपल सा एक पॉइंट इसमें जो मेंशन है दैट इज लीनियर स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है दैट स्प्रिंग इज लीनियर, कहने मतलब प्रेशर और फोर्स और उसकी लेंथ का जो रेशियो, जो ग्राफ बनेगा वो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, जो दूसरा आपके पास है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं आपके पास। तो ये है कि आपसे कहा गया कि स्प्रिंग इज लीनियर, तो अगर स्प्रिंग लीनियर है तो जो 1 से 2 तक आप जा रहे हैं तो जो प्रेशर वॉल्यूम का कर्व बनेगा, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लेंथ, जितना लेंथ चेंज होगी एरिया तो कांस्टेंट है, जैसे लेंथ चेंज होगी वो ग्राफ लीनियर होगा, प्रेशर और वॉल्यूम, फोर्स फोर्स और वॉल्यूम उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेशर और लेंथ, दोनों को एरिया से डिवाइड। लीनियर स्प्रिंग है तो उसका जो कर्व होगा वो दैट विल बी लीनियर। तो हियर P1 is given as 200, P2 is given as 320, P1 is given as P1 is given as 0.05, ऑलराइट, यहाँ पे 2 है, V2 is given as twice of, तो V2 is given as twice of P1, तो यहाँ पे हमें अगर चाहिए वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन होगा दैट विल बी सिंपल, तो प्रोसेस 1 to 2 में होगा वर्क डन होगा दैट विल बी राइट, एरिया अंडर द कर्व 1 2, एरिया अंडर द कर्व 1 2, टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी एरिया अंडर कर्व 1 2, एरिया अंडर द कर्व 1 2, और कितना है, एक तो ऊपर ट्राइंगल है 1/2, 1/2 बेस, बेस इज बेस इज पॉइंट, इसको डबल कर लेंगे 0.21, बेस इज 0.21, ये हाइट, ये जो हाइट है, हाइट इंटू बेस, हाइट कितना है 320 माइनस 200, और ये जो बेस है ये बेस कितना है दैट इज 0.1 माइनस 0.05 होगा दैट इज 0.05, 0.05 प्लस ये एरिया जो आपने नीचे वाले एरिया है इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, इस एरिया को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, एंड दिस एरिया इज 200 इंटू दिस 0.0, 200 इंटू पॉइंट, ओके, इसको आप ऐड कर लेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, and that is 320 minus 200, 200 into 0.05 that is 30, यहाँ पे जो आपको वर्क डन आ जाएगा दैट इज 30 किलो, एक तो वर्क डन था, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज आवर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक और मेथड, तो वर्क डन फाइंड करने का एक हमारे पास फर्स्ट मेथड था, एक मेथड हमारे पास और एक मेथड हमारे पास और है इसको सॉल्व करने, राइट, एंड दैट इज एक मेथड हमारे पास इसको और सॉल्व करने का है, तो इसको हम चाहें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड
सेकेंड मेथड ये है कि हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। वर्क डन होगा, राइट। एक तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो इसमें दो चीजें हैं। एक, अगर ये स्प्रिंग ना होता, अगर स्प्रिंग ना होती तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता और वॉल्यूम V1 से V2 तक चला जाता। तो वर्क डन दो चीजें होता, एक तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम V1 टू, इसका वॉल्यूम चेंज होता है फ्रॉम V1 टू V2, और प्लस, लेकिन उसमें स्प्रिंग है, हम स्प्रिंग का वर्क भी ऐड करें, प्लस स्प्रिंग। एंड व्हाट इज कांस्टेंट प्रेशर वर्क? दैट इज 200, जो प्रेशर होता है पहले कांस्टेंट, एंड दैट इज 0.05, प्लस व्हाट इज स्प्रिंग वर्क? हाफ kx स्क्वायर, दैट इज 10 प्लस हाफ 150 into 0.2, that means this is 10, that is 13, राइट। तो इसको हम दो पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इस चीज को हम चाहते थे इस चीज को हम दो पार्ट में भी कन्वर्ट करते। एक, अब ये सोच के देखिए कि अगर स्प्रिंग यहाँ पे ना होती, ये जो प्रोसेस होता कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता फ्रॉम V1 टू V2, ओके, तो उसका वर्क आपने लिख लिया कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क फ्रॉम V1 टू V2, राइट। लेकिन अब हमारे पास स्प्रिंग भी है, तो वर्क आपका स्प्रिंग के अगेंस्ट भी हुआ होगा, तो जो स्प्रिंग वाला वर्क है उसको भी आपने ऐड कर दिया, राइट। यू विल ऐड टू थिंग, one constant pressure process from V1 to constant pressure process from V1 to V2 एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अगर स्प्रिंग ना होती, सिंपली यहाँ पे अगर स्प्रिंग ना होती और आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया होता, स्प्रिंग ना होती तो हीट करना स्टार्ट कर दिया होता, तो ये पिस्टन आपका सिंपली यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाता, वॉल्यूम यहाँ पे V1 होता और ये V2, ओके। लेकिन अब स्प्रिंग है तो आपको स्प्रिंग का वर्क भी ऐड करना पड़ेगा, हाफ के एक्स, सिंपली दो पार्ट में कन्वर्ट करके इसको ऐसे आप ऐसे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। या फिर इस प्रॉब्लम में आपसे सिंपली कह दिया गया था द स्प्रिंग इज लीनियर, तो अगर स्प्रिंग लीनियर है, लीनियर स्प्रिंग है, इसका मतलब इसका जो फोर्स है और जो लेंथ है, उसका फोर्स और एलोंगेशन, जितना फोर्स लग रहा है उसका जो एलोंगेशन है, फिर कॉम्प्रेशन है, उसके बीच में जो कर्व है दैट इज लीनियर, राइट। तो आपने यहाँ पे इसको प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया, प्रेशर एंड वॉल्यूम कन्वर्ट कर लिया, और जो लीनियर स्प्रिंग है तो दैट वेरिएशन विल बी लीनियर। आपने ग्राफ बना लिया, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लिया, एंड यू सिंपली फाइंड आंसर। दोनों आंसर होगा आपका 13 किलो जूल। आपने यहाँ पे सिंपली देखिए दिस आंसर इज 13 किलो, ओके। तो दिस वे यू कैन फाइंड योर। ये सारी चीजें जो वर्क डन के पीछे की जो थ्योरी है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इन द सब्जेक्ट। ये सारा प्लेलिस्ट आपको थर्मोडायनामिक्स का जो प्लेलिस्ट है अंडर माय नेम दैट इज रवि, ये जो प्लेलिस्ट है आप इस प्लेलिस्ट में फाइंड कर लेंगे, थर्मोडायनामिक्स का सारा लेक्चर आपका अवेलेबल है। 3 लेक्चर अगर आप देखना चाहते हो वहां से आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लेके हर चीज आपका अवेलेबल। अदरवाइज आई एम आल्सो गोइंग टू स्टार्ट ऑन अनअकैडमी, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप, on the Unacademy app, I'm going to start full course on thermodynamics. Full course on the app also, full course on basic thermodynamics. Then we'll continue basic thermodynamics. Then applied thermodynamics also on basic thermodynamics. This I'm going to start from right tomorrow onwards. You can find my name there, right, on the Unacademy Learning app, and you can follow me on the Unacademy Learning app, and you will right, you will get the notification whenever this course will start. In 1 or 2 days I will be starting full course on basic thermodynamics. तो अगर आप लाइव देखना चाहते हैं लाइव भी देख सकते हैं। लाइव देखने का फायदा ये है कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप क्लास में ही पूछ सकते हैं, ठीक। तो आप उसको फाइंड कर लेंगे, या फिर जो इंजीनियरिंग लाइव चैनल है आपका, अगर आपको नहीं मिलता है ये, अगर आपको सर्च करने के बाद तो जो इंजीनियरिंग लाइव आपका चैनल है, इस चैनल का टेलीग्राम चैनल आपको इस लिंक में होगा, इस वीडियो के लिंक पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप डिमांड कर लेंगे तो मैं आपको अनअकैडमी के जो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ऐप में, उसका लिंक आपको सेंड कर दूँगा, ओके। तो यू कैन वॉच द लाइव लेक्चर्स। इंजीनियरिंग लाइव चैनल पे जो आप ये वीडियो है, इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी सॉरी इंजीनियरिंग लाइव चैनल है इसका आपको
टेलीग्राम चैनल यहाँ पे गिवन होगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अगर आपको चाहिए। एनीवे, thank you very much. Thanks for the joining in. Subscribe to this channel and also get your plus subscription. Use this code RaviPY to get 10% of the discount, 10% डिस्काउंट in your total subscription fees. कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, प्लस या फिर आइकॉन। लेकिन अगर आप प्लस के लिए जाते हैं तो यू विल गेट एक पर्सनल कोच, जिनके साथ आप वन टू वन डिस्कशन कर सकते हैं अपनी डाउट्स के बारे में, अपनी एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी के बारे में। दैट विल हेल्प यू इन द securing better time. Okay, so I hope you got the point. Thank you very much.